Hello and welcome to our live session on robotic assisted cardiac surgery. We have amongst us today Dr. Varun Bansal. He is the consultant cardiothoracic surgeon and vascular surgeon at Indraprastha Apollo Hospitals. So today we will be talking about the robotic assisted cardiac surgery. How is it different from the normal cardiac surgery? What are the side effects? What are the cost implications? And what are the long-term benefits of getting a robotic assisted cardiac surgery? We welcome Dr. Varun to the show. Dr. Varun has been associated with Indraprastha Apollo Hospitals. He has over 12 years of experience in and has trained nationally and internationally from KMC College, Manipal, and also from University of Toronto. So welcome, Dr. Varun. Having me here and for this opportunity to connect with the listeners and the viewers to spread awareness about robotics and cardiac surgery. It's an upcoming branch these days, and I, as a young surgeon, have a keen interest in developing this program. And looking at the outcomes as the patients benefit, it gives me immense pleasure and hope that this will, in total, benefit a lot of patients if it becomes popular. Yes, sir. Sir, we want to understand, like these days, everyone has this question in mind while doctor prescribes, ask for a cardiothoracic surgery. Is there any simpler method to go for it? We really want to understand what is robotic assisted CABG, sir. So, I would ask for your permission to speak in Hindi as well, so as to connect with more people than just people who understand English. So, अगर being a cardiac surgeon as well and more than 12 years in the field, अगर मुझे आज अपनी cardiac surgery करानी पड़ेगी तो सबसे ज़्यादा डर लगेगा sternotomy से. Like cutting open the bone is the thing which will dread me the most. That is one of the major reasons कि मैं अपनी cardiac surgery नहीं करा पाऊँ. And robotic assisted cardiac surgery gives us total freedom from that. अगर हम कोई भी cardiac surgery इस तरीके से कर सकें कि उसमें bone cutting की जरूरत नहीं पड़े, I think that will give away the fear of patients of going through the procedure. Robotics give us. If we don't cut the bone, as far as I understand, the chest bone needs to be cut to reach to the heart. So if we will not cut that, how will we reach the heart, sir? So the traditional method was to cut the bone open and put our hands inside because we need our fingers for the procedure that needs to be done. With the robot, we can just make 2 holes here inside of the chest and through the ribs. From between the ribs, we don't even have to cut the ribs. Ribs को बिना काटे उनके अंदर के बीच से 8 millimeters diameter के instruments हैं जो कि अंदर चले जाते हैं, and that gives us agility and ability to perform the surgeries without opening the chest on its own. Robotic instruments जो हैं, they have the ability of moving around 360 degrees, जो हमारी wrist भी move नहीं करती है जितना. From here to here, they can move without any problem. And the instruments around 1 centimeter in length. So my fingers are even broader. They have the only thing which we miss in robotic surgery is tactile sensation, but the ability which we get through robotics is even more better than that. Magnification हो जाती है, 10 times magnified camera है जो कि अंदर जाता है, और जो instruments की ability है, that is beyond imagination. Even we could, 20 years ago, even we could not think of that we would be able to do all this without opening the chest. Okay, so sir, what I understand, like it is good for the patient to go a robotic cardiac surgery. Equally, it is for the surgeon also to have a better view of the heart and better access and better imaging of the heart is possible while conducting the robotics. Our heart arteries vary from diameter from 1 millimeter to 3 millimeters. तो अगर 1 से 3 millimeter की artery को 10 times magnification पे देखा जाए, तो that is 1 centimeter and 3 to 3 centimeters. So imagine performing the same procedure over a 1 millimeter vessel versus on a 1 centimeter vessel. तो इतनी magnification के बाद अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं तो precision बहुत बढ़ जाती है, risk of injury, risk of chances कम हो जाते हैं, outcomes better हो जाते हैं, और क्योंकि bone cutting नहीं है तो bleeding कम होगी, क्योंकि जख्म बहुत छोटे हैं तो इसलिए chances of infection are very low, pain is very less. So in total, if we do not cut the bone and if we can reach the chest through in between the ribs, तो उससे patient की first is outcomes better हैं, second is pain कम है, faster recovery है. तो ये सब benefits जो हैं वो हमें मिलते हैं robotic technology की वजह से.
rather than कि हम अपने हाथ उसके अंदर डालें और सर्जरी करें. So अगर outcomes अच्छे हैं, so how soon can a person, resume his work? So far हमारे पे जो भी पेशेंट्स हैं जिनकी भी हमने सर्जरीज की हैं, दे आर आउट ऑफ आईसीयू ऑन डे 1. एक दिन वो Oh, स्टेप great. डाउन करते हैं एंड थर्ड डे वो वार्ड में चले जाते हैं. We let them stay in a ward. Actually, it is not absolutely necessary for them to stay in ward for 2 days, but third or fourth day they can go home. और उसके बाद वो 10 दिन बाद हॉस्पिटल में वापस आते हैं एक चेक रिव्यू के लिए कि सब कुछ ठीक है कि नहीं. वी डू ब्लड टेस्ट, एको, एंड दे कैन रिज्यूम देयर एक्टिव वर्क आफ्टर 10 days, जो कि कन्वेंशनल सर्जरी में एक डिस्टेंट ड्रीम है, क्योंकि वहां पे बोन कटिंग की वजह से, जैसे कि आपको पता होगा, अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए तो उसको हीलिंग में 6 weeks लगते हैं. तो ऐसे ही अगर Yes. बोन कटिंग हो तो उसमें 6 to 8 weeks का रेस्ट रहता है और पेशेंट को थोड़ा पेन डिस्कम्फर्ट रहता है. तो दे यूजुअली टेक अराउंड 1 to 2 months टू गो बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ. बट रोबोटिक सर्जरी में दे कैन गो बैक विद इन 2 weeks, इवन शॉर्टर टाइम. ये जो सर्जरी है सर, लाइक इसमें कितनी देर लगती है सर? जब सर्जरी करते हैं कितना देर ओटी में स्पेंड करते हैं पेशेंट? ड्यूरेशन ऑफ सर्जरी सेम है दोनों में, क्योंकि एक में अगर कन्वेंशनल सर्जरी देखी जाए तो ओपनिंग और क्लोजिंग चेस्ट में भी अराउंड 1 to 1.5 hours लगते हैं. रोबोटिक्स में वो जो काम है वो प्रोसीजर पे लग जाता है. तो नियरली जो सर्जिकल टाइम है वो नियरली सेम है, अराउंड 3 to 4 hours, प्लस द एनेस्थीसिया टाइम कि आधा घंटा पहले 1 घंटा बाद में, ये सब कुछ मिला के ओवरऑल 5 hours लगते हैं. सो प्रोसीजर ड्यूरेशन ऑफ द एनेस्थीसिया इज नियरली द सेम. Sir, then is it like covered under insurance also, the robotic assisted cardiac surgery? अभी इंडिया में सिनेरियो नोबडी वांट्स टू पे. सेम इज विद इंश्योरेंस कंपनीज. तो इंश्योरेंस कंपनीज में क्या है, अभी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आर पेइंग बट गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज आर नॉट. 2019 में IRDAI गाइडलाइंस भी आई थी कि रोबोटिक सर्जरीज कवर होनी चाहिए. बट अभी भी इंडिया इज फेसिंग अ सिनेरियो व्हेन healthcare is not available to each and every person in the country. So we still have challenges of making it a mass mission कि सबको सब कुछ अवेलेबल हो, जिसके लिए इकोनॉमिक्स को एक मेजर फैक्टर प्ले करना पड़ता है. तो रोबोटिक सर्जरी अभी सब जगह अप्रूव नहीं होती है, बट फॉर कैंडिडेट्स हु कैन अफोर्ड और हु कैन बी स्पॉन्सर्ड, ये एक बिल्कुल बेनिफिशियल बूम है, रियली बेनिफिशियल प्रोसीजर. Okay, so sir, like what is the difference between if we go for a open cardiac surgery and a robotic cardiac assisted surgery, robotic Cost-wise. assisted surgery? Yes, sir, cost wise. तो पहली बात है, इसमें रोबोट के इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं. तो दैट इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज एंड थ्रो इंस्ट्रूमेंट्स. वी कैन नॉट रीयूज इंस्ट्रूमेंट. एक पेशेंट पे यूज हुए उसको दूसरे पेशेंट पे यूज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो इन्फेक्शन का रिस्क करता है. तो इसलिए वो रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स की जो कॉस्ट है, उनके अंदर कुछ गाइडलाइंस है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को कुछ नंबर ऑफ टाइम्स के लिए यूज किया जा सकता है, पर वो भी अनलिमिटेड नहीं है. जस्ट लाइक ह्यूमन हैंड्स को हम तब तक यूज करते हैं जब तक हम जिंदा हैं. पर रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स की लाइफ है कि मे बी 10 टाइम्स यूज, 15 टाइम्स यूज, 5 टाइम्स यूज. तो हर एक इंस्ट्रूमेंट की लाइफ की वजह से उसका जो कॉस्ट है वो ऐड हो जाता है, प्लस द कॉस्ट ऑफ द रोबोट. तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट जो है वो नियरली 2 टाइम्स हो जाती है फॉर प्रोसीजर ओनली. बट अगर हम ओवरऑल इकोनॉमिक्स ऑफ हेल्थ केयर देखें तो पेशेंट कैन गो होम इन 3 days, कैन गो बैक टू वर्क इन 10 days and does not take leave for 1.5 months. So overall the procedure cost versus total healthcare cost comes to nearly the same. Okay. So and Yes, most of we our are patients, also- आपने देखा होगा कि young patients are coming with heart diseases, 40s, 50s. So those patients are bread earners of their family. उनको वापस जाके काम करना है, उनको घर पे बैठे रहने की उनके पास लग्जरी नहीं है. जो कि अगर पहले 70 years की एज पे अगर किसी को कार्डियक सर्जरी होती तो वो 2 महीने घर पे रहते थे, किसी को प्रॉब्लम नहीं होती. और अगर 50s की एज में, 60s की एज में, प्री रिटायरमेंट एज पे सर्जरी करानी है, तो एवरीबडी वांट्स टू गो बैक टू देयर वर्क. नॉट इवन वर्क, दे वांट टू गो बैक टू देयर लाइफ. सो ओवरऑल इकोनॉमिक्स बेटर रहती है. Thank you, sir. Yeah, this is really insightful, and it is also bringing down the fear of getting a cardiac surgery done. As speaking on behalf of the public and our viewers, I would say the very word cardiac surgery, it brings fear and jitters to us. So, but by talking to you, Similarly, so let me ask you a question. What fears you most if any of your family members has to go for a cardiac surgery? किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है?
कि पूरा हार्ट को बोन कटिंग ओपन होगी, करना होगा, लेग पे हार्ट से इंसिजन होंगे, जाएगा। ऊपर से नीचे तक कट लग जाएगा। तो यस, और रोबोटिक्स सीएबीजी में अगर हम दोनों आर्टरीज चेस्ट के अंदर से ले लें विदाउट द कटिंग ओपन द चेस्ट, so will it not benefit the patient? Definitely would. एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में भी अगर हम वी डू नॉट टेक द वेन्स फ्रॉम द लेग, तो उसमें पेशेंट्स के लॉन्ग टर्म एस्पेक्ट में भी वो बेटर है, क्योंकि आर्टेरियल कॉन्ड्यूट्स आर मच बेटर कॉन्ड्यूट्स देन वीनस कॉन्ड्यूट्स। ये तो ग्लोबल स्टडीज हैं वर्ल्ड ओवर की वीनस कॉन्ड्यूट्स की जो लाइफ स्पैन है वो अराउंड 10 to 15 years है, और आर्टेरियल कॉन्ड्यूट्स की लाइफ जो है अराउंड 20-25 years और इवन लॉन्गर है। तो किसी भी पेशेंट को अगर कार्डियक सर्जरी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें डर ज्यादा बड़ा है rather than की ट्रीटमेंट या प्रोसीजर से। जी, एंड खत्म कर सकें तो आई थिंक दैट विल बी मोर बेनिफिशियल टू द पेशेंट्स, टू ओवरऑल सोसाइटी। हेल्थ केयर एक्सेस अगर रोबोटिक्स को इंट्रोड्यूस करके हम वो डर खत्म कर दें जिसमें पेशेंट को डर लगता है, आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ ट्रीटमेंट प्रोसीजर rather than a traumatic procedure. Right, sir. And sir, like जो complications हैं after the procedure, like open heart में हमें ज़्यादा रेस्ट करना है, और क्या वो complications हमारे robotics से कम हो सकते हैं, या और क्या होते हैं complication robotics ये के? देखो, ये अभी हम जो बात कर रहे थे ये वही सेम क्वेश्चन है कि अगर कट नहीं होगा तो ब्लीडिंग नहीं होगी, कट नहीं होगा तो पेन नहीं होगा, कट नहीं होगा तो इन्फेक्शन नहीं होगी। तो जो मेजर एडवांटेजेस हैं वो नॉट डूइंग द स्टेनोटॉमी है एंड प्रेसिजन सर्जरी है, कि अगर मैग्नीफाइड प्रोसीजर कर रहे हैं हम तो प्रेसिजन होगी। तो सेम ट्रांसलेट्स टू द बेनिफिट्स एंड लेसर साइड इफेक्ट्स। लेसर साइड इफेक्ट, लेस पेन, लेस ब्लीडिंग, लेस चांस ऑफ इन्फेक्शन, क्विकर रिकवरी, मोर प्रिसाइज सर्जरी। सिर्फ सीएबीजी नहीं, अगर माइट्रल वाल्व सर्जरी करनी है, एओर्टिक वाल्व सर्जरी करनी है, तो जो भी हार्ट के ऊपर प्रोसीजर्स हैं अगर उनकी हम प्रेसिजन बढ़ा दें, उनकी हम एक्यूरेसी बढ़ा दें, तो व्हाट डू यू थिंक, विल इट बेनिफिट द पेशेंट? आई एम श्योर इट विल। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you so much for your great detailed insight on robotic assisted cardiac surgery. And sir, one final message that you would like to give to our viewers. So my message to not just viewers, to everybody, to the people who are listening or even who are not, maybe you get that information from anybody. One, awareness is very important. Patient has to be aware कि उसके पास treatment options क्या है, उनके साथ ये किया जा सकता है कि नहीं। रोबोटिक सर्जरी कैन नॉट बी ऑफर्ड टू एवरीबडी, वी हैव टू बी वेरी श्योर अबाउट हु वी ऑफर इट टू। इमरजेंसीज में प्रोसीजर्स में रोबोटिक सर्जरी ऑफर नहीं की जाती है। अगर हार्ट बहुत वीक है, लेस देन 25% इजेक्शन फ्रैक्शन है, लेस देन 30% है, बहुत वीक हो चुका है हार्ट, तो उसमें रोबोटिक असिस्ट सर्जरी अभी ऑफर नहीं की जा सकती है। मे बी ड्यू लर्निंग प्रोसेस एंड कर्व हम लोग उसको भी ऑफर करने लगेंगे, पर अभी वी हैव टू चूज द राइट कैंडिडेट, बिकॉज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। Immediate outcome, patient has to go home safe and sound, well in time, and second is long term outcome, कि patient cannot keep coming back to the hospital for the same procedure over and over again। हमें रोबोटिक सर्जरी या कोई भी प्रोसीजर ऐसे करना है कि पेशेंट को दोबारा हॉस्पिटल में नहीं आना। तो फॉर दैट अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेशेंट सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ईच एंड एवरी पेशेंट शुड नो, एंड इफ दे हैव अ प्रॉब्लम दे शुड कंसल्ट, रादर देन कि हम लोग आजकल ना जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से हर किसी के फोन में इंफॉर्मेशन है, बट उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है वी आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट। तो अवेयरनेस इज द की, अर्ली डायग्नोसिस इज द की, एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट with all the technologies and modalities available is the best possible outcome for the patient. Thank you, sir. Thank you, sir, for your valuable time. And to our viewers and to our listeners, if you're seeking any professional help, please feel free to write down on our social media handles, and do not forget to subscribe to our channel. Thank you. You can always contact us. Anybody, Dr. Neha, or anybody who's listening, who's there, who wants to write to us, please feel free. I personally believe that education is the key, and if we are all educated, we'll get the best out of each and every system that we have, and for all our family members as well. Thank you. Thank you.